नमस्ते, राम राम, अस्सलाम वालेकुम, सत श्री अकाल, बोला। आप सभी का स्वागत है हमारे प्रोग्राम में और आप देख रहे हैं फीजी इन फोकस। मैं हूं आपकी होस्ट सेरा शर्मा। हम इस प्रोग्राम को ब्रॉडकास्ट कर रहे हैं फ्रॉम अनसीडेड टेरिटरीज ऑफ स्क्वामिश, सिल्वरटूथ एंड मस्कियम नेशंस। May 1st until May 8th is a mental health awareness month. इस वीक में मेंटल हेल्थ पर हम फोकस करेंगे। कोई मेंटल हेल्थ के बारे में बात नहीं करना चाहते। मेंटल हेल्थ should be treated like any other diseases such as diabetes, cholesterol and heart disease. Mental health is a disease and it can be treated just like any other diseases. May 14 को मदर्स डे है। सभी को अपने मम को याद करेंगे। ये ज़रूरी है कि सिर्फ मदर्स डे के लिए हम अपने माँ को याद ना करें। वी शुड रिमेंबर आवर मदर्स डे एवरी डे। एवरी डे शुड बी मदर्स डे। हैप्पी मदर्स डे टू यू ऑल। आप देख रहे हैं अभी सिविल सर्वेंट्स आर ऑन स्ट्राइक। दिस इंक्लूड्स बॉर्डर सर्विसेज, पासपोर्ट ऑफिसर्स, EI ऑफिसर्स, इमिग्रेशन ऑफिसर्स, as well as CRA, Canada Revenue Services. The deadline to file the taxes was on May 1st. अगर आपने टैक्स फाइल नहीं किए है बिफोर डेडलाइन, if you owe money, then Revenue Canada will start you interest on the money you owe to them. आप सभी का फ़ोन कॉल्स और फीडबैक के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। अब हम मिलते हैं एक शॉर्ट ब्रेक के बाद with some words from our sponsors. I understand how important it is to have a place called home, and it's frustrating using your hard-earned money on rent. Vic Prasad can make you a homeowner. Get pre-approved services provided to first-time buyers and new immigrants. You can qualify for mortgage even if you have bad credit. Call Vic Prasad now on 604-306-6647. Vic Prasad is associated with Craft Mortgages Canada Incorporated. For any kind of visa-related services, contact Milky Way Immigration, a galaxy of opportunities located at Unit 209-9547 152 Street, Surrey, BC. They have licensed immigration consultants, placement officers, and LMIA experts to meet your immigration and recruitment needs. Book one-time free consultation either on Facebook or by calling 604-396-0005. Bollywood Banquet Hall and Conference Center, located at Pile Business Center at 201-8166 128th Street in Surrey. No celebration is too small to accommodate you. They have newly renovated 2 halls to serve you, up to 1,000 guest capacity, top-notch chefs to delight you with delectable and heavenly cuisine. So just call Bollywood Banquet Hall at 604-598-2700 for your events. Benisi Mobile Detailing Services. They offer commercial trucks, cars, SUV, boats, bikes, RVs, and much more. Just give them a call at 778-808-2859. Just give them a call at 778-808-2859 and they will do all kind of services at your home. Thank you sponsors for your support. अब हमारे साथ पूरे हफ्ते भर के फीजी के न्यूज़ लेकर आ गए हैं विक प्रसाद जी। नमस्कार, फिजी इन फोकस में आपका स्वागत है। ये कार्यक्रम वैनकूवर कनाडा से प्रसारित हो रहा है। फिजी न्यूज़ के साथ मैं हूं विक प्रसाद। पूर्व अटॉर्नी जनरल एएस सैयद कयूम पर क्राइम्स एक्ट 2009 की सेक्शन 139 के तहत अब्यूज़ ऑफ ऑफिस का आरोप लगाया गया है। पुलिस चीफ ऑफ इंटेलिजेंस एंड इन्वेस्टिगेशन ACP सकियो रेकादी ने पुष्टि की है कि सैयद कयूम हिरासत में है और उन्हें सोमवार को सुबह मजिस्ट्रेट कोर्ट में पेश किया जाएगा। ऑफिस ऑफ द डायरेक्टर ऑफ पब्लिक प्रोसिक्यूशन द्वारा स्वीकृत आरोप फरवरी में सैयद कयूम के खिलाफ चुनाव के एक्टिंग सुपरवाइजर ऑफ इलेक्शंस अना मताइदीवा द्वारा दर्ज की गई थी एक रिपोर्ट से संबंधित है। उनका कहना है कि पुलिस फोर्स इन हाई प्रोफाइल मामलों की जांच के संबंध में सभी से धैर्य रखने की मांग कर रहे हैं। उन्होंने दोहराया है कि जांचकर्ताओं को सबूत और बयान इकट्ठा करने के लिए समय चाहिए और जांच प्रक्रिया में जल्दबाजी प्रोसिक्यूशन के परिणाम को बाधित कर सकता है। ACP रेकादी का कहना है कि डायरेक्टर ऑफ क्रिमिनल इन्वेस्टिगेशन की देखरेख वाली CID स्पेशल टास्क फोर्स इंडिपेंडेंट है और किसी अन्य सीनियर पुलिस ऑफिसर से कोई निर्देश नहीं लेती है, ना ही ऑर्गेनाइजेशन के बाहर किसी व्यक्ति द्वारा जांच को प्रभावित कर सकता है। वो कहते हैं कि स्पेशल टास्क फोर्स सीधे उनके ऑफिस को रिपोर्ट करती है। 2023 के लिए फिजी में विजिटर्स अराइवल में फर्स्ट क्वार्टर के आधार पर पहले के अनुमान से अधिक होने की उम्मीद है, जो इस अवधि के लिए 2019 के कुल से अधिक है।
रिजर्व बैंक ऑफ फिजी का कहना है कि फर्स्ट क्वार्टर में कुल टोटल विजिटर अराइवल्स में वृद्धि हुई है, जो मुख्य रूप से ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, नॉर्थ अमेरिका के अधिक विजिटर्स द्वारा समर्थित किया गया है। आरबीएफ घरेलू स्तर पर कहता है कि ठोस बिजली उत्पादन और टूरिज्म के उपवाद के साथ अवलोकन के तहत कुछ क्षेत्रीय संकेत हाल ही के महीने में नरम प्रदर्शन को दर्शाते हैं। आरबीएफ का कहना है कि इसी समय रोजगार के स्तर में तेजी और पॉजिटिव कंजम्पशन के लिए एक्टिविटी को प्रेरित करती है। मार्च में ऐतिहासिक रूप से कम उधार दरों और अधिक फेवरेबल इकोनॉमिक कंडीशंस के अनुरूप प्राइवेट सेक्टर को क्रेडिट के सालाना वृद्धि हुई है। पुलिस चाहती है कि नाइट क्लबों के घंटे कम किए जाए क्योंकि उनके सामने लोगों को सुरक्षा को लेकर कई चुनौतियां आई है। चीफ ऑफ ऑपरेशंस एसीपी लेवाई ड्रीव का कहना है कि नाइट क्लबों और उनके घंटों की निगरानी करते समय पुलिस फोर्स के सामने आने वाली कुछ चुनौतियां दर्ज की गई है, जिसमें आपराधिक गतिविधियों, सिटीजन्स की सुरक्षा और कम्युनिटी पर इसका प्रभाव है। उनका कहना है कि शहरों में लोगों के समूह जो ऑड आवर्स के दौरान लोगों को परेशान करते हैं, विशेष रूप से मार्केट वेंडर्स के लिए जोखिम पैदा करते हैं जब शराबी नाइट क्लबों से बाहर आते हैं। जैसे कि कोका कोला गेम्स जारी है, माइनर्स या 18 साल के उम्र के कम लोगों को मनोरंजन नहीं किया जाना चाहिए या नाइट क्लबों में प्रवेश करने की अनुमति नहीं देनी चाहिए। आईसीपी ड्रीव का कहना है कि नाइट क्लब जो माइनर्स को मनोरंजन करते हैं या उनकी अनुमति देते हैं, उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी और उन्हें कानून का पालन करना चाहिए। उनका यह भी कहना है कि क्लबों में सुरक्षा अधिकारियों और बाउंसरों को आईडी कार्ड की जांच करनी चाहिए यदि सुरक्षा के लिए कम उम्र के होने का संदेह है। आईसीपी ड्रीव का कहना है कि पहले कुछ नाइट क्लबों में मालिकों को क्लबों के माइनर्स को अनुमति देने के लिए वार्न किया गया था और उन्हें चेतावनी दी गई है कि ऐसा दोबारा न होना चाहिए। नाइट क्लब के समय की समीक्षा पर परामर्श अगले सप्ताह वेस्टर्न डिवीजन में किया जाएगा। प्रधानमंत्री सितिवेनी रंबुका के अनुसार कोalition गवर्नमेंट अपने 100 डेज वादों पर प्रगति कर रही है। 50% से अधिक लक्ष्य पहले ही प्राप्त कर लिए गए हैं। रंबुका का कहना है कि सरकार यह सुनिश्चित करने में समय लेगी कि सभी वादे पूरी तरह से पूरा हो जाए। कोalition गवर्नमेंट के पावर में आने के कुछ ही समय बाद पिछले साल 24 दिसंबर को 100 डे प्रॉमिस इनिशिएटिव शुरू की गई थी और रंबुका का कहना है कि वे वादों को पूरा करने में जल्दबाजी नहीं करेंगे। प्रधानमंत्री और कैबिनेट मिनिस्टर के ओवरसीज अलाउंसेस को भी कम करने की आवश्यकता है। यह बात प्रधानमंत्री सितिवेनी रंबुका ने कहा जब उन्होंने पुष्टि की कि रिव्यू जल्द ही समाप्त हो जाएगी और कई मंत्रियों से मांग किया जा रहा है। सुमित सिंह के एक सवाल पर जवाब देते हुए प्रधानमंत्री ने अभी तक विदेश यात्राओं और ओवरसीज के लिए प्रतिदिन $3,000 मिल रहे थे। रंबुका कहते हैं कि फिलहाल यह समान स्तर है क्योंकि इसे बदला नहीं जाएगा। उनका कहना है कि इसे बदलने के लिए पार्लियामेंट्री एमेंडमेंट्स कमेटी के साथ की आवश्यकता होगी और इसके संशोधन के लिए अमेंडमेंट के रूप में संसद में भी इसे लाना पड़ेगा। आप देख रहे फिजी इन फोकस। अब कुछ स्थानीय समाचार। बीसी सरकार रिकमेंड कर रही है कि सरी आरसीएमपी रखने के बजाय एक म्युनिसिपल पुलिस फोर्स को रोल आउट किया जाए। पब्लिक सेफ्टी मिनिस्टर और सॉलिसिटर जनरल माइक फानवत ने शुक्रवार सुबह रिकमेंडेशन की घोषणा करते हुए कहा कि बीसी में पब्लिक सेफ्टी प्राप्त करने का सबसे अच्छा तरीका है। फानवत ने कहा है कि सरी के लोग बस इस पर वर्षों से बहुत निराश है, लेकिन हमें पुलिस की अनुपस्थिति को कम करने के लिए आगे बढ़ना है जब हमें इसकी सबसे अधिक आवश्यकता है। प्रोविंस डायरेक्टर ऑफ पुलिस सर्विसेज ने सरी शहर, सरी आरसीएमपी और सरी पुलिस सेवा द्वारा प्रस्तुत योजनाओं के आधार पर 500 पेजेस की रिपोर्ट संकलित करने के बाद यह निर्णय लिया है। मिनिस्टर आरसीएमपी में स्टाफ की चुनौतियों की ओर इशारा करते जहां वर्तमान में सिफारिश के पीछे तर्क के रूप में प्रांत भर में 1500 से अधिक वैकेंसीज है। फानवत नोट करने किया है कि आरसीएमपी की तुलना में नगर पालिका सेवा में प्रति वर्ष लगभग 30 मिलियन से अधिक खर्च होंगे। प्रोविंस ने इस चेंज के लिए सरी को फाइनेंशियल सपोर्ट की पेशकश की है ताकि सरी रेसिडेंट्स को कोई पैसा नहीं देना पड़े। हालांकि प्रोविंस को सिफारिश बाइंडिंग नहीं है क्योंकि सरी सिटी काउंसिल के पास अभी भी आरसीएमपी को रखने का विकल्प है अगर वो चाहे तो।
बैनवी बीसी के एक वरिष्ठ व्यक्ति के साथ क्रिप्टो करेंसी स्कैम में $7.5 मिलियन से अधिक का घोटाला किया गया है। क्रिप्टो करेंसी बेस्ड फ्रॉड स्कीम के बारे में पुलिस से नवीनतम चेतावनी जारी किया गया है। पुलिस का कहना है कि यह स्कैम कई महीनों तक चली और इसे वरिष्ठ व्यक्ति को मूल धोखाधड़ी में पैसे चोरी हुआ और फिर किसी ने दावा किया कि वो उनके पैसे वापस लौटाने में मदद कर सकते हैं। आरसीएमपी के एक बयान में कहा गया है कि पीड़िता ने पुलिस को बताया कि उन्हें 2022 के स्प्रिंग में एक मैंडरिन लैंग्वेज में टेक्स्ट मैसेज मिला था जो उनके व्यक्तिगत व्यवसाय के या पर्सनल बिजनेस हिस्ट्री के बारे में तलाश कर रहे थे। इस जोड़ी ने फ़ोन, टेक्स्ट, ईमेल और एक चैट ऐप पर अक्सर बात की, जबकि स्कैमर ने पीड़ित को एक ऑनलाइन क्रिप्टो करेंसी ट्रेडिंग ऐप के माध्यम से लाखों डॉलर का इन्वेस्ट करने के लिए राज़ी करना शुरू कर दिया। पुलिस पब्लिक से ऐसे स्कैम के लिए सतर्क रहने की मांग कर रही है और कोई भी टेक्स्ट मैसेज या ईमेल नहीं खोले जिसमें या जिसके बारे में वो श्योर नहीं है। आप देख रहे फिजियन फोकस विक प्रसाद के संग। अब कुछ खेलकूद के जगत से जानकारी। डिजिटल प्रीमियर लीग के अंतर्गत सुब्रेल पार्क लंबासा और ताबुआ के बीच में खेल हुआ, जिसमें दोनों टीम 1-1 गोल से ड्रॉ ठहरे। लंबासी की ओर से इलाइसा वुलेमस नफूजो ने गोल बनाया और ताबुआ की ओर से रातुंदाओ ने गोल बनाया। बा और रेवा के बीच में जो रातु दकम्बाऊ पार्क में खेल हुआ उसमें बा की शानदार जीत रेवा से 1-0 से हुआ। बा की ओर से समूएला नेम्बिनिया ने गोल बनाया। सुबह ने नांदी को 2-1 से पराजित किया। रातु दकम्बाऊ पार्क पर लोटोका और तालेवुनित सीरी के बीच में जो खेल हुआ उसमें लोटोका ने तालेवुनित सीरी को 1-0 से पराजित किया। लोटोका की ओर से स्ट्राइकर सैरुसी नौलुम्बो ने गोल बनाया। नावुआ ने नंडोका को 4-0 से पराजित किया। 2022 में फिजी एयरवेज ने फिजी रग्बी यूनियन को स्पॉन्सरशिप के तौर पर $2 मिलियन दिया है, जिसमें 1.15 मिलियन कैश है और बाकी 1.58 मिलियन ट्रिप्स इत्यादि है। फिजी रग्बी यूनियन ने 2022 फाइनेंशियल ईयर में 1.354 मिलियन का लॉस हुआ है, जबकि 2021 में उन्होंने 269,554 का प्रॉफिट दिखाया था। अगर आप भी कोई इन्फॉर्मेशन शेयर करना चाहते हैं तो आप हमको संपर्क कर सकते हैं या स्टूडियो में कॉल कर सकते हैं। विक प्रसाद को यहीं पर दीजिए इजाज़त। धन्यवाद। धन्यवाद विक प्रसाद। अगर आपके पास भी कोई न्यूज़ है और आप न्यूज़ को शेयर करना चाहते हैं तो विक को कॉल कीजिए और हमारे स्टूडियो में भी आप कॉल कर सकते हैं। अब हम सभी को कुछ हाइलाइट्स दिखा रहे फीजी कनाडा बिजनेस एसोसिएशन नेटवर्किंग इवेंट। हैव अ लुक। COVID was number one, and now it's the price of inflation and price of food. I'm thinking, can people really afford to have gatherings, which I count on? People to have gatherings, yeah, they will rent. Capital, okay. Anybody else? What do you say? Exposure, competition. So what kind of things could you put in place as business owners to overcome some of these obstacles that you have to overcome? Some of these things that COVID hits, I know you lost business during COVID, but what could you do to overcome some of that stuff? What can you do? Like the areas that don't know us very well, which is I think Surrey, because Langley and Fort, Chilliwack are very well established there. One thing that I want with the business was all the previous customers and clients. So I'm good there. So what if you had an opportunity to create like cash flow that was passive income that you didn't have to really do anything for, but you knew was always there? Sign me up. I love this guy already. so this is what I'm referring to. So traditionally we've been taught that we should work hard and save money. But there's also another way of doing it where you can work hard and invest your money and find different ways to grow it. And there's different ways you can do that. There's the banks have the biggest scam running with the GICs. Traditionally 2 to 4%. You would know, right? And then 2 to 4%, and now maybe it's a little bit higher at 5%. But realistically, there's other opportunities out there. So other avenues, stock market. But a lot of people don't know about mortgage investment corporations. So mortgage investment corporations is a different way of looking at how to invest your money. So
Noel has been an investor with us for many years. Wanted to share some of your experiences real quick before we go a little bit more in detail? Okay, I'll tell you my story, which really hits home. About 4 years ago, my wife passed away, and I had no idea what to do, and I got a little bit of insurance money with it. But my daughter was 10 at the time, and my son was 6. So I'm like, okay, how am I going to raise my kids and try to make money at the same time and spend time with my kids, right? So I'm like, how do I do this? And I've known Nitesh since me and him grew up. We're family friends, cousins, grew up together in Edmonton. And so I talked to him about it, and he's like, well, you have a little bit of insurance money. You're going to put it into the bank. You're going to make 2 to 3% on it. Well, that's not going to do shit for me, right? So he said, well, why don't we do this? Why don't you get into the MIC, which is a mortgage investment we're talking about, and we'll make your money grow faster. So here I am. I think I took about $300,000 at first, and I invested it with him, and my return was 12%. So on $300,000, I'm getting $3,000 back a month with all my checks post-dated and given to me right up front. This allowed me to work less, spend more time with my kids, and raise them properly. So this is just one of my stories that hits home. And then we had and then once I felt comfortable with it, I added a little bit more and a little bit more, and now I work 16 hours a week, and I make $5,000 a month just off my investment. And I'm going to have that invested because I'm going to make more money there than I would in the bank, right? When my kids are old enough that I can turn around and pull that money out. And if I needed extra cash, I called him and said, Nitesh, I need 50 grand. And he says, give me 90 days and I'll have that 50 grand back to you. Not a problem. Haven't had a problem. Haven't had a check bounce. I work with him. I know exactly where he's going. I've also helped my brother Abby here. Abby's followed my footsteps. He took a retirement package and he semi-retired as well. Same thing, collecting a bunch of money. Mortgage free. Age of 47 retired, right? Age of 45 semi-retired. So that's just. Do you want to tell your story real quick? Just real quick. Yeah, I'm just gonna add that Nivel. Nivel actually always approached me when he got. Thank you. If you like to renew your membership, it's only $100 per year. ये networking sponsor किया गया था Blue Pearl Mortgage Group. Thank you Blue Pearl Mortgage for sponsoring our networking event. हमारे पास कुछ public service announcements है. लीजिए देखिए. Please have your pen and paper ready to make some notes. Food drive fundraising in aid of Nilesh Chandra for his medical treatment in India. ये होने जा रही है May 13th from 11 a.m. until 4 p.m. Tickets is only $10. It will be halal chicken pulao, tomato chutney. Tickets can be purchased from Milesh Prasad at 604-760-5754, Suman Prakash or Vic Prasad at 604-306-6647. Khalsa Reunion 2023 ये होने जा रही है in Fiji on July 29 at Khatri Hall in Ba, Fiji. There are only limited tickets are left for the event. For tickets and more information, please go to their page at Khalsa College Ba, Fiji Reunion 2023. No Ties 1879 and the Indo-Fiji Cultural Society presents Grimitia Day on May 13th from 1:30 p.m. to 4:30 p.m. at Clayton Community Center, 7155 187 A Street in Surrey, BC. This is a reflection of the lived experiences and history of indentured laborers in Fiji. Tickets are on eventbrite.com. Mental Health and Wellbeing Workshop ये होने जा रही है May 7th from 11 a.m. until 2 p.m. This is a free event at Empire Banquet Hall in Surrey, 12888 80th Avenue. Refreshments will be served. If you're coming, please let us know. अब हमारे स्टूडियो में इलेन मोहन कुछ इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन सरी पुलिसिंग SPS और RCMP के बारे में कुछ बात करेंगे. देखिए जी. नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब, बोला फीजी. जी हाँ दोस्तों, आप देख रहे हैं फीजी इन फोकस और आज हम आइलीन मोहन से कुछ बातचीत करेंगे इस विषय पर कि उसका जो बेटा था, it's about 17 years ago, he was killed and the case went to the Supreme Court and the decision has recently come down and Hammam will talk about that. जब हम उसके बारे में बात करेंगे तो जो पुलिसिंग का इशू है सरी में RCMP versus SPS.
उसमें भी हम कुछ नज़र डालेंगे कि what is a better police for our citizens of Surrey. So welcome. Thank you so much for coming, Eileen. Thank you, Camilla, for Yeah. having me. Yeah. So I watched you on the news, and rightfully so, as a mother, you had all the hopes that when your case has gone to all this smaller thing and went to the Supreme Court of Canada, which is the highest court in Canada, and the decision of those two, is it two of them that are still behind bars, but they are saying that they should have a fair trial. I think one died in the custody as well, right? Yes. So how did you feel about that? What came up for you when the decision say we should open this case up? Well, first of all, I thought that the case would have ruled in our favor because police misconduct, that's how they said they reopened a fresh trial for police misconduct. And what they did in here was quite sad because they painted the entire police force with the same brush of misconduct, whereas there was only misconduct on a part of 5 police officers. And these police officers are no longer in the force. They have had their day in court. They had sentences handed down to them. And I thought it was all done and over with. What this is on the criminals' lawyers' side, is on technical grounds, is to reopen the police misconduct case. And again, only 5 police officers. The rest of the police officers worked patiently, diligently, compassionately in Christopher's case. So now the Supreme Court of Canada has ruled that the police misconduct should be looked into. So those misconduct, those people are let go. Yep. They are not in the force anymore. So why even that is a question now? When we are talking about this after so many years, that was dealt with at a lower case and is dealt with. Yes. So you cannot keep on bringing police misconduct over and over again when you are deciding at the Supreme or the highest level that was dealt with a smaller case. So that's what shocked you, that they are keep bringing up police misconduct in the investigation of Of course, it's been almost 16 years since Yeah. Christopher died. And, I knew this was before the Supreme Court of Canada. And I was breathing a sigh of relief. I, as a person, as a mother, I too picked up Christopher and myself, and I started putting one step forward in my life and another step. And I thought, they will rule for us, not against us. And I have a right to live, to breathe in this world. It just seems like all my rights and my son's rights have no value in the Supreme Court. Only the rights of the criminals are so supreme over us. So how do I get to live a little before I die? And sometimes I think this case will take me to my grave. Because I will know, you have to put it, nobody's getting younger. No. We all are getting older day by day. And how do I justify this? Yep. And there's no justification in here. So the only person who is winning in this announcement is the criminal who has been handed down the first-degree murder charges. Now his lawyer is setting his eyes to have his first-degree murder charges stayed. Yeah, okay. And that's what he said during the TV interview. It's a very sad thing. I'm But I know so that- heartbroken. And I know you're never going to stop.
And even if that decision comes down, you are fighting for not yourself, but you are fighting for everybody else, and you're fighting for your son. At least end of the day, when you meet him in next life, whatever, I have done what I was supposed to do as a mother when your life was taken away, when you were taken away from me. So you are fighting for justice. It just seems like I never get an opportunity to breathe and to live a little. Yeah. You know, I mean, like, there's no space for me. I start taking a few steps forward, then and I then take a million steps back backward, now. yeah. I've spent 219 days in court. And so, I mean, I was honestly very, very brokenhearted. And I still am. And I have to face the consequences. We're going to go back to court. We're going to have this hearing. And who knows what happens. हमारे पास इतना ही समय था। अब सभी से विदाई लेना चाहते हैं। आपको बहुत बहुत धन्यवाद हमारे शो को देखने के लिए। हम आशा करते हैं कि आपने हमारे शो को एंजॉय किया होगा और ऐसे ही आप सब जुड़े रहे फिजी इन फोकस से। इस शो को आप फिर से देख सकते हैं every Thursdays at 2:30 p.m. and on Sundays at 4 p.m. Vancouver time on Channel 4 and in Calgary at 5 p.m. on Channel 10. आप लोग YouTube चैनल पर भी फिजी इन फोकस को देख सकते हैं। Please don't forget to press the like button and do not forget to share. Fiji in Focus brings 3 other shows. आपके लिए लाते हैं Asian Pulse TV on every Wednesdays at 2:30 p.m., Thursdays at 8:30 p.m., and Saturdays at 5:30 p.m. Camila Singh Talk Show on every Mondays at 10 a.m. and Sundays at 5:30 p.m. VT Vibes TV on Thursdays at 10 p.m. and Sundays at 4:30 p.m. Please watch all our shows, like and share. अब हमारी मुलाकात होगी next week Tuesday at 10 p.m. only on Shaw. हम आप सभी को शुक्रिया अदा करते हैं कि आपने हमारे टाइम स्पेंड किया हमारे साथ. प्लीज़ वॉच एंड लाइक एंड शेयर. आई एम योर होस्ट सेरा शर्मा विनाका.